वेलकम बैक टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं आरके फरवरी 2026 का स्प्रिंट 3 का क्विज। सो क्लिक स्टार्ट लैब। नाउ ये लैब बाकियों की तरह नहीं है, ये बस एक क्विज लैब है। तो इसमें आपको बस 10 मिनट्स इस लैब को ओपन रखना होगा एंड उसके बाद आप एंड लैब कर सकते हो और आपको पूरा स्कोर मिल जाएगा। हाउएवर इसमें क्विज है तो हम इसको भी अटेम्प्ट करते हैं। सो इसमें आंसर अगर आपको गलत भी हो जाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके पॉइंट्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। 10 मिनट्स बाद रिगार्डलेस ऑफ योर क्विज कंप्लीशन it will be completed. So you can just end this lab. For now, we will update in the quiz and then we will wait till it reaches 19-minute mark. So this one says in Google Cloud, which component is used to route incoming traffic to the nearest healthy region? So it should be global load balancer. Next, second question is which Google Cloud component monitors the status of instances to ensure traffic is only sent to healthy VMs? It is health check. Which command is used to create a new deployment in a Google Kubernetes engine cluster? It is qwiklabs create deployment. Alright. Now, the fourth question. In Google Cloud Kubernetes engine, what is the smallest deployable object that represents a single instance of a running process? It is pod. Now, which command line utility is used to manage and deploy resources within a Kubernetes cluster? It is qwiklabs. We have used it a lot. And the last question, the sixth question is which Google Cloud command creates a new cluster in Google Kubernetes engine? We already created a lot of clusters along the labs that we just did in this sprint 3. So it should be gcloud container cluster create. And all the quiz is complete. So now we will just wait for the time to pass. So as you can see यहाँ पे 10 minutes से ज़्यादा पास हो चुके हैं, तो we can just simply end this lab. एंड अगर हमें चेक करना है कि ये चीज़ सही में एंड हुई है एंड हमें इसके पॉइंट्स मिले हैं, तो इसके लिए हम सिंपली बैक जा सकते हैं एंड यहाँ पे हमें दिखेगा कंप्लीटेड, यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है।